as well. So this is your March, February, March 2019, paper 3. We are doing the web page. Okay, evaluation doesn't come anymore. Okay, so you don't have to do this part. Okay, state the appropriate. This doesn't come anymore. I'll start from here, right? Okay. अब आपका evaluation नहीं आता. Oh, you so far. You work for Houters Design and will develop a web pages for a small British company called Glorious Gardens. Efficient markup and style sheet must be used. All color codes must be in hexadecimal. Create the folder this. Locate the following files. Open and resize the image this so that it's 672 pixel wide and 896 pixel high. Save the image as this. Remove the left of the image. ठीक है और अच्छा अब मसला ये है कि मेरे पास फोटोशॉप नहीं है so I'll try to do it without Photoshop hopefully yes ये इस फिर इसमें लैपटॉप में नहीं ये भी और भी हो जाएगा। सॉरी क्या कह रहे हो नहीं, फिर इसमें सिर्फ वो है साइज आई फोटोशॉप रीसाइज कर दो। मैं फोटोशॉप में कर देता हूँ आई हैव फोटोशॉप आई एम ग्लैड मैं इंस्टॉल कर लिया सो व्हाट वी हैव ऑब्वियसली पूरा करना है मैं स्किप नहीं कर सकता है पार्ट ना आई हैव टू डू इट okay so open and resize the image this one let me just open it 1 second Photoshop actually tends to do it very efficiently all this is why छोटे से भी काम करने में preferably आप इसमें करो बेहतर है so that's my folder I'll just copy it so the path सर मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी सर। हम्म सर जो हमारे हाफ ईयरली का जो प्रैक्टिकल होगा सर उसमें कौन कौन से वो आ रहे हैं सॉफ्टवेयर? बेटा सब कुछ आएगा सर all वो everything भी will आएगा पावर पॉइंट, जी पावर पॉइंट वर्ड। जी obviously you've done that haven't we done that मैंने कराया हुआ आप लोग Okay, so open and resize the image this so that it's 627 wide and this. So we have to resize the image. So 672, 896. So we'll just come into image. We'll come into image size. Okay, I will basically unlock this and this has to be in pixels. So we have over here is the your width is 672, so the width is 672, and your height over here is 896, and the height is 896, right? And I'll press OK to resize. Okay, just ठीक हो गया press Ctrl plus to obviously zoom back. ठीक है ये हो गया basically. Next, what we have to do is done. Save the image as this. So I'll copy it. This is March 19 beta. March 19, P3. File, save as. In the same folder that I'm working on, should be saved over here. Paste, and should be saved as one dot dot this at what? Dot .jpg. So it will be saved as .jpg. Okay, done with that. Remove the left and the right of the image to make 271 pixel and white. So actually we have to crop. So if you click on crop, you will see the dimensions here. They are saying is we want is 271. So I want is 271 here. And at the same time I want is 896. 896. So we'll have is 896. ठीक है? So I'll press enter. क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि if you read the question again, okay, it should be, so we don't want this center se crop kar do. You get my point or not? Okay. We have to save the image as this. So crop mein jaake just enter the dimension at the top. It's not something complicated. Save as. सर जी बेटा सर उन्होंने कहा है कि उसको 271 पिक्सल्स वाइड होना चाहिए, सर वो जरूरी है कि वो एग्जैक्ट वही हो? ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही हो. This is why we use Photoshop. It should be exact. ठीक है Okay. सर।
Display the content of this folder showing your folder name, file names, SIs, and image dimensions, which actually means is that if you have this folder, they're saying is you're supposed to show is this detail. Okay, this detail, right? Okay, let's go back. Okay, create a web page, spring.htm. So we'll open up Dreamweaver. And we'll do is we will actually remove this because this was not part of our initial thing. So I'll just save it as which folder? Make sure you always save it in the same folder because somehow if mistakenly if you save it some other folder and Ali Raya is coming now. Spring.htm. Right? Next. A web page must be in all browsers, so we have to make the following table. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 rows and 3 columns. 6 rows and 3 columns. So let's make that. It has to be the body tag. Make sure table is in body tag. Okay, not somewhere else. Inside the body tag. Coding में साथ साथ किया करो. So I have to make is 6 rows and 3 columns. ठीक है? Created with this. Right? Here we go. तो इसको visible कर देते हैं. Okay, next. The first one has to be merged. Okay, you know all this, so obviously I can go a bit fast on this. Here we go. Properties open karo. And this has to be merged. Iske baad, what else? Sorry, but a question. Yeah, so this has to, last one has to be merged. So last one has to be merged as well. And you can see is URL. These has to be merged. Am I right? ऐसे ही है ना? जी ठीक है. This has to be 800 by 100 pixels. So जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको. So this one has to be width is yeah, how much was it? 800. Width is 800 and height is 100. So width is 800 and the height is 100, as you can see. ठीक हो गया. In order to save the time, I'll just copy this. Okay, and now step by step we'll do it. So next, what we have to do is 300 by 3. This is 300 by 225. So this is space should be there. Yeah, this is a bit time consuming, but obviously 300 by 225. Two 25 by 225. So up use the arrow key. इस तरफ आओ. You will have is 225 by 225. Right? Then we have is ये सारे वही होंगे. Good for us. So all we have to do is 300 by 225. But first let's do these. So this will also be the same. Okay. This will also be the same. हो गया. This one. This one. Are you following me? Are you with me, man? All of you? Right? Okay. जी सर. And G. Yes, sir. And these will be the same. Good. Control C. This will also be the same. Control V. And yes. No, I didn't do this one. This will be the same as well. ठीक हो गया. Or this lastly, ये वाला जो है. This will also be the same. Control V. ठीक हो गया. हमारे सारे सेट हो गए. न सारे सेट नहीं हुए. The last these two 275. So this one is supposed to be
uh, 275, 275 by 900. The height is more obviously, right? Then we are left with what? We are left with the last one, 800 by 150. So if you come to the last one, I know it's all distorted, no problem. This one is Control V. The width is 800 and 150. 150 is the height. सर आपसे एक क्वेश्चन है, बोलो. अगर उसने पिक्सेल्स ना दिया हो मतलब तो फिर एज इट इज ही लिखेंगे ना, जैसे जी, 800 as it is means pixel actually. It's the same thing. ठीक है. अच्छा, ऊपर उसने क्या क्या बस ब्राउजर उसने कोई width बताई टेबल की? नो. सो या ऑल द टेबल बोर्ड मस्ट बी पिक्सल 2. बॉर्डर वो कह रहा है बॉर्डर्स कब कर दो 2, ये उसने कहा है. सो सिंस आई डोंट हैव द विड्थ टोटल डिफाइंड, मैं इसको विड्थ को रिमूव कर देता हूँ. ठीक है. I'll just save this. I'll go to my browser, sorry, my folder, not browser, and let me view this way. This was the spring. Let me open it up. So you see, it opens exactly perfectly the way it should be. ठीक है? So if we're done with this part, अब हम आगे चलते हैं. Place in cell the text this. तो इस पे आके हमने कर. तो बेटा इस पेपर में मुश्किल क्या था? Where did you get stuck? हाँ? सर हम अगली दफा बॉबी ब्रिक्स वाला खेलते हैं जी तो वो मैं कल बहुत कर लेंगे. जी वो कल कर लेंगे, मगर इसमें क्या इशू था बेटा? So anyway, उसको होगा कोई इशू, नो प्रॉब्लम, नो इशू. उसका राइट है. बल्कि अच्छी बात है उसने मुझे पेपर करने को कहा है. Oh, where's my properties? Why do I close my? कल बॉर्डर करते हैं, ओके? कल फॉर श्योर, ठीक है? तो मुझे कल की और कुछ ना कहे, बस बॉर्डर करते हैं कल. एंड देन व्हाट वी हैव इज, क्योंकि अब टाइम नहीं है बॉर्डर में अभी नहीं कर सकते, ठीक है ना? देन वी हैव अब्दुल राफिया बाहर है. ओके, चल CFHJ. So CFHJ, there is the second column. Apple. Okay. Apple, camellia, cherry, and forest. I don't know what these fruits are actually. I know apple. Okay. So we're saying is we have to place over here is, oh my God, how am I supposed to? Oh, they've named it. Good. Right. And then image. This was supposed to be, so they are in the order. Good for us. Right? Placed. Then they're saying is, no, no, no. They said place the text. I'm sorry. Okay. That wasn't a skill issue. Okay, I have to go back. Come on, not fair, not fair. ठीक हो गया, कुछ नहीं होता. All we do is we just have to place the text. So paste. वही मैंने कहा इमेजेस सारी उस साइज की नहीं है. Maybe afterwards they would have asked for inline styles or inline style question. ठीक है. Text should be H2. So select all this text and make sure it's H2. ठीक हो गया. In cell DEGI. So D, what does it say? यही है. DBEGI. So it's actually this. DBEGI. So D में क्या place करना है? Okay, this is actually D. So we have to place what in D? The lyric 2. So we'll simply go into image. We'll place his lyric 2. Fine. Okay, double click on the border to range. ठीक है. इसके बाद इसमें आओ. We have to place what? Apple tree. Can someone mute please? Apple tree. So this is the apple. Then we have to place is the camellia.
Then we have to place is the cherry, and we have to place is this, right? Done with this. Okay. In place in cell K, K actually was the last one. और उसमें क्या place करना है? The text this. Okay. So we have a text over here, this text. So you simply have to copy this text and you have to place in this over here. सर जी बेटा सर अगर वो बोले कि इमेज का हमने अल्टरनेट टेक्स्ट भी लिखना है तो सर वो अपने से हम कुछ भी लिख सकते हैं ना जो रेलेवेंट हो। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो तुम प्रेजेंट हो आज यस ऑनलाइन में सीरियस हो यार वेयर इज योर फ्रेंड सर क्लास में ही है। क्लास में है यस सर। अच्छा वी हैव टू एक्चुअली सेट दिस एज क्या था इसमें क्वेश्चन क्या था सॉरी ओके वो कहता है इसमें रिप्लेस द टेक्स्ट इंसर्ट योर नेम सेंड कैंडिडेट नंबर with your name and can number obviously जो भी होगा you'll replace that and set this as h3 so whatever we have to set the entire thing as h3 so obviously you'll replace your name send and can number with your name you'll select this and you will simply make this as h3 okay make only the text link a hyperlink to email to this with the subject like this so make only the link द टेक्स्ट लिंक यहाँ कहीं होगा लिंक ये लिंक इसको हमने करना है कनेक्ट किससे ओवर हेयर सो आई टाइप ओवर हेयर इज मेल टू बताता हूँ किससे करना है लेट मी जस्ट somehow no I want to copy this email address so मैं इसको नोटपैड में इसलिए लिख रहा हूँ so that you can see वहाँ बहुत छोटा आएगा okay so here we go how do I increase the font size control yeah so paste जी ये नहीं था so we'll type over here. You have to remember this code. This is mail to colon and question mark subject is equals to, and we'll write the subject, whatever the subject was, ask the expert. So we'll put this ask the expert, right? तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ just to show you मैंने इधर किया है and I'm going to actually link it over here, paste it and just press enter and we've linked it. ठीक है so that's the way we do this part um, make appropriate text is displayed if the image वही alter text आपने लिखना है उसका attach the style sheet this to the web page so they have provided us with a style sheet and what we do is we go into view and CSS designer और इधर आके आपको पता है we come into source attach browse and we have to attach is gg style okay किया तो style sheet has been attached to it ठीक हो गया right आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं okay here we go okay you will create a second style sheet using the most efficient styles make sure style sheet does not contain any HTML create a new style sheet gg followed by your name for example this मैं इसी नाम से create कर देता हूँ problem so file new and we have to make a CSS file create okay and I'll save it in the same folder obviously in this folder and we'll name it as this for example but it has to be named as .css always remember .css okay always .css but obviously extension में गलती ना करना and save it okay then let's go back we have over here all this okay place your name send number candidate number as a comment so I'll just copy this how do you place it as a comment well right away you can even write over here if you don't have it here you see this you can apply this comment yes or no okay so you can even do this way as well control V that's your comment okay written your name and then we have is okay
edit the style sheet. Uh, edit the style sheet. We don't have to create a new style sheet. Okay, anyway, edit style sheet. The image this becomes a single background image replaced at the top right of the page. So all we have to do is we have to insert is जी सब comment आया कोई hmm it's 18 I think so web authoring this is web authoring okay ठीक है सर। अच्छा इसको अब हमने करना है रिप्लेस एक्चुअली प्लेस करना है बैकग्राउंड सो हम इधर आएंगे वी हैव टू प्लेस इट इन द बैकग्राउंड इमेज में क्या आना है हमारा व्हाट वाज इट व्हिच image was it gg logo.png so background image you have to place is this one ठीक है और इसमें क्या करना है हमने वो कह रहा है place the top right uh, image the single background image placed in top right of the of each page so obviously इसको हम करेंगे नो रिपीट ऑब्वियसली वो नो रिपीट होगा ना बैकग्राउंड रिपीट ना हो तो इसको पोजीशन करने के लिए हम इसको पोजीशन से करेंगे ना वो हम करेंगे आपके ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा सर ये परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। क्या बेटा सर परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा टॉप। जी तो हमने ये करना है एक्चुअली राइट पे ठीक है ऑन द राइट and we have to make it right top ठीक है right top get the point that's what they asked all tables जी सर। are left aligned the browser so if we have a table tag our दोस्त ने table नहीं बनाया हुआ we will just make one so selector will make is a table tag ठीक है and we have to make sure that the table that we have made is actually right aligned so width या आपकी अलाइनमेंट आती है टेबल की इधर गई लेफ्ट राइट ठीक है राइट हो गया और all table borders are visible with 2 pixel width so obviously we have to make the table visible so हम टेबल में आएंगे इसके बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज में where is the border here we go so this is the border um, so if you want them to be visible you will actually make it solid so that it's visible ठीक है याद रखना सॉलिड करते हैं with 2 pixel wide so width को आप कर दोगे in pixels and you will make it is 2 okay solid means it should be visible right save your style sheet and attach it to your web page so I will just save it we'll come here and we will attach this as well so attach okay browse and the second style sheet was this one हमने किया okay ठीक है अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं वो कहते हैं डिस्प्ले मेक श्योर द न्यू स्टाइल शीट हैज अ हाई प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी किसकी होती है हाई प्रायोरिटी उस स्टाइल शीट की होती है जो नीचे वाले आएगी सो ये हाई प्रायोरिटी आ तो रही है नीचे ही है ये हाई प्रायोरिटी है इसकी ठीक है सो डिस्प्ले द वेब पेज ब्राउजर और आपने HTML उसका प्रिंट आउट लेना है सो इफ वी लुक एट दिस पेज सेव नहीं किया होगा so you save this and you also save this as well ठीक है
सो सब ये टेबल सेंटर पे नहीं आना चाहिए था। ये तो टॉप राइट पे आ रहा है, टेबल सेंटर पे नहीं आ रहा। फिर हाँ, टेबल ने लेफ्ट पे आना है। लेफ्ट क्या? सर उन्होंने कहा टेबल ने लेफ्ट पे आना है। ओ मैंने, अच्छा टेबल राइट, मैंने मैंने राइट कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ, तो अजीब सी बात है, वो कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहा है? तो अजीब सा लग रहा है, ऐसा क्यों क्वेश्चन बनाएंगे? यस फाइन, गेट द पॉइंट। सो वी डन दिस पेपर। कोडिंग का प्रिंट आउट जी लेना है, सर। इसका ब्राउजर में 2 स्क्रीनशॉट्स लेनी है, और सीएसएस की। इज इट क्लियर बेटा? कंफ्यूजन क्लियर हो गई? यस यस और नो? सर। ठीक है, ठहरो मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। डोंट गो एनीवेयर, आई टेक योर अटेंडेंस। गुड। इसका आप पेपर कर रहे हो, आपने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन वही पूछता है जो पेपर कर रहा होता है। कल हम बॉब ब्रेक करते हैं बिल्कुल इंशाल्लाह, ठीक है? सो ऑल ऑफ यू शुड बी प्रेजेंट टुमारो। अल्लाह हाफिज़ सर। एक सेकंड भी जा जाओ, मैं अटेंडेंस ले लूँ। मेरी अटेंडेंस नहीं, डोंट लीव, डोंट लीव अमीगो, डोंट लीव। वो अटेंडेंस पूरी नहीं ली गई थी, बॉटम तक, मैं फिर लेना चाहता हूँ। तो हियर वी गो। ओके, नाउ यू कैन लीव। अल्लाह हाफिज। अल्लाह वापिस हाफिज़ सर। सर। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर। बेटा।